Appellant is also present over. हाँ ठीक है ना, आप तो क्या बन रहा है? कुछ नहीं बनता सर, prosecution has totally failed to establish the case. वकील के रूप में बोल रहे हो कि कोर्ट के ऑफिसर के रूप में बोल रहे हो? मैंने उससे भी कल बात की थी, उसने भी जो बताया वो बिल्कुल सही बता रहा है, कॉर्पोरेट हो रही उसकी बात रिकॉर्ड से। लिखना शुरू करें। 302 में कन्विक्शन है? 302 में कन्विक्शन है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि डिसीज और बोथ दी अपीलेंट्स वो सब एक ही गांव के बड़े अच्छे मित्र थे। होली का दिन था, दोनों तीनों ने शराब पी, कहीं मेले में कोई प्रोग्राम देखने गए, लौट के मिनी बुलक कार्ट से लौट रहे थे और ये वो बुलक कार्ट से गिर गया। पढ़िएगा पैरा 3 पढ़िएगा। पैरा 3 अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 4/3/96 को ग्राम खनकार में भगोरिया था। ये होली का त्योहार को वहाँ मालूम है, होली का त्योहार नहीं होता है भगोरिया। भगोरिया ट्राइबल एरिया में होली के टाइम में खेले जाने वाला एक उत्सव है। अभियुक्त मोहन सिंह मृतक रमेश को भगोरिया के लिए बुलाने आया था। उसके साथ मृतक रमेश आरोपी मोहन के छकड़े में बैलगाड़ी बैठकर भगोरिया के लिए गए। इन दोनों के साथ दूसरा सहायक, इसमें दो अपीलेंट है, दूसरे का क्या हुआ? वो बेल आउट है सर। वो बेल आउट है। चलिए, अपील तो एक ही है सर। बेल आउट दोनों थे साहब। हाँ, ये जंप कर गए। ठीक है, समझ गए। हाँ दूसरा साबित कालू अन्य व्यक्ति कुस्सिया और गेंदलाल भी गए थे और बाजार करने के बाद रात 8 बजे लगभग आरोपी मोहन की छकड़ी में केवल रमेश सोई हुई स्थिति में गया। उस वक्त हैंडपंप के पास दोनों अभियुक्त मोहन सिंह और कालू सिंह खड़े थे और छकड़ी में रमेश लेटा हुआ था, जिन्हें आशा 3 टीकाराम 4 टीकाराम आशा फातिया ने देखा। बाद में गाड़ी मोहन सिंह के घर के यहाँ पहुंची, वहां पर रोने चिल्लाने की आवाज आई। मृतक का भाई रामा आशा साथ मोहन के घर गया तो देखा कि रमेश घायल पड़ा है, उसके शरीर में कई चोटें, कुछ चोटें सिर पर थी। हालात देखकर रामा ने अपने भाई रूप सिंह को बुलाया। इसी बीच टीकाराम भी वहां पर आ गया। रामा रमेश को अपने कंधे पर उठाकर घर ले गया। तब रमेश ने बताया कि कालू और मोहन ने मारा है। उस वक्त मृतक रमेश की पत्नी उमाबाई भी मौके पर मौजूद थी। बाद में खटिया में डालकर रिपोर्ट करने जा रहे थे कि रास्ते में घर का पानी भी पिलाया और घाट पर पहुंचे तो रमेश की मृत्यु हो गई। तब वापिस उसे घर आए। फिर रूप सिंह ने रात 10:15 पर नेपानगर में FIR दर्ज कराई, जिससे हत्या का कारण दर्शाया गया। पंचायत में मृतक आरोपी के पिता गेंदलाल के खिलाफ चुनाव P1 नेम्ड FIR है, इन लोगों का नाम है उसमें, मोहन सिंह और कालू का। हाँ, इसने कराई। रूप सिंह इज PW, रूप सिंह इज PW6। फातिया इज द इम्पोर्टेंट विटनेस मिलॉर्ड। देखेंगे, सभी देखेंगे जी। फातिया PW11। PW11। डॉक्टर कौन है जिसने पोस्टमार्टम किया है? डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर गोपाल पंटवाल। PW12। वकील साहब, आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप बिगड़ पड़े आओगे। PW12 डॉक्टर ने कहा सर कि कॉन्शियस नहीं हो सकता, जैसी चोटें थी। वो उतने पे आइएगा। पैरा प्रकाश एग्जामिनेशन पैरा 5 पेज नंबर पेपर बुक का 32। जी। यह बात सही है कि उपरोक्त सारी चोटें एक ही हथियार से आना संभव नहीं है। यह बात सही कि उपरोक्त 5 चोटों की हड्डी के बाहर दिखने दी। यह बात सही उपरोक्त चोटों के रक्तस्राव हड्डियां बाहर दिखने रमेश का सिर क्षतिग्रस्त हो गया था। सही है मृतक के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो गया था। सही है कि उपरोक्त चोटें अत्यधिक रक्तस्राव से मृतक रमेश अचेत होने की पूरी संभावना। यह बात सही है कि मृतक चोटें रक्तस्राव देखते हुए बोलने की स्थिति में नहीं था। केवल एक एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेके आया, वो दो लोग कहते ओरल डाइंग डिक्लेरेशन है। फातिया और टीकाराम। नहीं, फातिया ऐसा नहीं बोलता सर। फातिया का देखें तो फातिया तो बिल्कुल सही बात कह रहा। PW11 कौन सी है? PW3 वाइफ और ब्रदर तो कह रहे कि उसने बताया था कि इनने मारा है। देख लेना। हाँ सर, को भी देख लेते हैं। ब्रदर PW क्या है? ब्रदर रूप सिंह PW6 भी है। रामा, अरे बताया किसको? रामा को बताया। ये सब कहते हमारे सामने बताया था। चलिए। रमेश मेरा पति था, वह मर चुका है। करीब 6-7 महीने की बात। एक सेकंड। डॉक्टर ये कह रहा है क्या कि गिरने से चोटें आ सकती हैं बैलगाड़ी से? सर ऐसा उसको कोई सजेशन है नहीं। वहीं तो आपकी डिफेंस आएगी, बिकॉज लास्ट सीन की एविडेंस है आपकी।
PW3 कह रही है कि आप लेकर गए थे उसको साथ हाँ में। हाँ, उससे मामा भांजे हैं। उससे डिनाई नहीं किया किसी ने। नहीं, वो तो ठीक है। अब ये जो चोटें हैं, ठीक है ना, आपको ये तो पूछना पड़ेगा ना, कटा घाव फटा घाव, ठीक है, कटा घाव 1 2 3 4 तो कटे घाव है। आपको ये जब तक आप ये नहीं पूछेंगे कि ये जो है चोटें बैलगाड़ी से गिरने, आपकी तो स्टोरी है ना, बैलगाड़ी से गिर और वो पड़े, सजेशन नहीं, मगर ये वो थोड़ा सजेशन के बगैर कैसे हो ये जाए? ध्वनि प्रतिध्वनित हो रहा है। चोट नंबर 7 और 8 में सिर के रगड़ते हुए जाने से आना संभव है। अरे भाई गिर ठीक है, के रगड़ता, पहले पहले आप हाँ वो सर, वो सजेशन नहीं गिर है, पड़ा, उसके बाद में वो सजेशन नहीं है। वही सजेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इट मे बी द मिस्टेक ऑफ द काउंसिल। इसके लिए सर इसके काउंसिल की मिस्टेक का ही तो PW11 को देखें आप, हाँ। तो हमारी स्टोरी PW11, यस। PW11 क्या फात्या। मैं अभियुक्तगण को जानता हूँ, मर चुका है करीब 8-9 महीने पूर्व की बात। उस समय मैं डवाली में ही रहता था और टीकाराम शाम को करीब मैं और टीकाराम शाम को 8 बजे जंगल लकड़ी लेने जा रहे थे। तो हमको हैंडपंप के पास मोहन और कालू मिले और वहां पर गाड़ी बैल थे, गाड़ी में रमेश बैठा था। मोहन हमको देखकर बोला, कौन है रे? हमने कहा कि टीकाराम और फात्या हैं। मोहन हैंडपंप पर पानी पी रहा था और कालू गाड़ी में बैठा था, रमेश गाड़ी में था। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी भाग गई है रे, रमेश को बचाओ, बैल भड़क गए हैं, और गाड़ी चल पड़ी। तो अभियुक्तगण ने कहा कि दौड़ो रे, रमेश को बचाओ। तो गाड़ी मोहन के घर पहुंच गई। मोहन के घर के लोग उसे उतारकर पानी पिला रहे थे और धन सिंह सरपंच के पास। वो तो जब उसको काट दिया, उसके बाद बैलगाड़ी में डाल के ला रहे थे तो बैल बिदक गए, वो गिर गया, तो उसके बाद 6 7 8 नंबर की चोटें रगड़ने से आ सकती हैं। लेकिन जो ये पहली 1 से 5 की चोटें हैं, ये तो शार्प एंड इंसाइज से हैं, ये बैलगाड़ी से गिरने से नहीं आ सकती वकील साहब। सर बैलगाड़ी से नीचे गिरा, वो जो बैलगाड़ी के पहिए होते थे वो आएगा, तो वो उसकी जो उससे 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 भी लेसिरेटेड वुंड आएगा, कुचला हुआ घाव है, क्रश्ड इंजरी आएगी, नहीं सर, कटा हुआ घाव नहीं आएगा। लोहे की जो 5 पे चढ़ी होती है, डॉक्टर से पूछ लेते हैं उसके जो कॉर्नर होते हैं वो शार्प एज होते हैं। तो आप पूछ लेते हैं ना डॉक्टर से कि बैलगाड़ी के पहिए से ये आ सकती है। अब केवल एविडेंस ये है कि उसने ओरल डाइंग डिक्लेरेशन दिया। 1 2 चेन ऑफ, अगर सर्कमस्टेंशियल उस ओरल डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कार्ड भी कर दें, क्योंकि PW3 बोल रही है पहले बोल रहा था फिर बाद में बेहोश था, उसके पहले बेहोश था, सो वी डिस्कार्ड दैट ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, बट सर्कमस्टांसेस आर दैट देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन टू दिस इफेक्ट दैट रमेश जो है वाज रिलेटेड टू कालू। 1 2 कालू एंड अदर दिस थिंग। सर इसका पैरा 3 देखें फातिया का। हाँ, पढ़िए। यह बात सही है कि हैंडपंप के पास मोहन, कालू और मृतक तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। हाँ ठीक है ना। तात्पर्य यह है कि वो हैंडपंप के पहले तक कोई मारपीट उसके साथ कुल्हाड़ी की जो है नहीं हुई थी। अरे भाई वो तो दारू पी और किसी बात पर हो गई, आप आपको आइडिया नहीं होगा फर्स्ट हैंड। ये वहां पर ये फातिया नहीं कहता कि उसको चोट लगी थी या घायल अवस्था में। इज नॉट एन आई विटनेस। नहीं, फातिया आई विटनेस बता रहा है हैंडपंप पे। वो कह रहा है कि जब ये तीनों हैंडपंप पे गाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी, तो तीनों वहां शराब पी रहे थे और फिर वहां बैलगाड़ी के बैल भड़क गए और वो गाड़ी लेके भगे। रमेश जी गाड़ी में बैठे थे, ये दोनों नीचे हैंडपंप पे पानी पी रहे थे और फिर ये बैल चूंकि घर पहचान थे तो अपने घर पहुंच गए सीधे। ये बाद में पीछे से पहुंचे हैं। वो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये इंजरी कॉर्पोरेट नहीं हो रही। कटा हुआ घाव दाहिनी तरफ सर पर पैराइटल रीजन का, उसका मार्क आकार स्पिंडल, अब उसके उसपे मार्जिन्स रेगुलर थे। ये बैलगाड़ी से कटने में रेगुलर मार्जिन नहीं आएंगे। गवाहों में आया कि गाड़ी उबड़ से खाबड़ रास्ता था, पत्थर नुकीले थे। ये गवाही में एडमिट किया है गवाहों ने लोकल। चलो, और फिर जो भी है वो मारने का, वो कहते हैं मोहन ने मारा था। किस चीज की है आपसे? हमसे कोई सीजर नहीं, मोहन से कुल्हाड़ी का सीजर आप बताते हैं। मोहन से हुआ है ना, ठीक। कालू से कोई सीजर नहीं है। ठीक है, मोहन का कहाँ है? और एग्जिबिट कालू के कपड़ों में खून पाया क्या? हाँ, वो तो सबके पाया जाए, सबने उठा के दैट शिफ्ट इज नॉट किया। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। हाँ, वो तो उसके रियल ब्रदर्स के में भी और वाइफ के कपड़ों में भी ब्लड आया है। कालू तो रिश्तेदारी था ना। नहीं, नहीं, मोहन का रिश्तेदार था, मामा भांजे थे। और इलेक्शन कालू की का दोस्त था। कालू मोहन का तीनों कंपनी थी, बताते तीनों हमेशा साथ में रहते थे, तीनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी। कुल्हाड़ी पे भी कहीं खून का आया नहीं है।
कुल्हाड़ी की बात कोर्ट में कही ने, वो जो पुलिस स्टेटमेंट में है ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, वहां पर कुल्हाड़ी वाली बात नहीं है। केवल इतना आया कि उसने बताया कि इनने मार दिया। फिर उसको कन्फ्रंट कराया है कोर्ट में, तो बोली हाँ मैंने पुलिस को B1 में नहीं है। डॉक्टर से पूछा क्या कि एक ही हथियार से ये चोटें हैं? डॉक्टर ने कहा एक से नहीं आ सकती है, ये कहा ना। यह बात सही कि उपरोक्त सारी चोटें एक ही हथियार से आना संभव नहीं है। पैरा 5 ऑफ PW12। सारी चोटें नहीं भैया, आप समझते ही नहीं। वह इनसे आपको इसमें कुछ भी पूछेंगे, 1 से 5 नंबर की जो चोटें साइज वुंड है, वैसा वो वैसा नहीं। उसी कुल्हाड़ी से आना संभव है। उन्होंने ये कहा कि सारी चोटें एक हथियार से आना संभव नहीं है। सभी उपरोक्त 5 चोटें में हड्डी बाहर दिख रही थी। सभी उपरोक्त चोटें रक्तस्राव और हड्डियां बाहर दिखने से रमेश का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। मृतक के शरीर पर अत्यधिक रक्तस्राव, उपरोक्त चोटें अत्यधिक रक्तस्राव से अचेत होने की पूरी संभावना है। जब्ती कहाँ से कुल्हाड़ी की? ये सीजर के बताने पर बताते उसने घर से निकाल के दिया। कहाँ है? PW6 रूपलाल क्या बोल रहे हैं? रूपलाल PW6 रूप सिंह। रूप सिंह रियल ब्रदर। मैं अभियुक्त को जानता हूँ, करीब 8-9 महीने पहले वो तो बेकार की बात है, नीचे आ जाइए। मोहन सिंह और कालू ने कुल्हाड़ी मारा है, उसने ऐसा बताया था। मैंने रमेश से पूछा क्या तो हुआ, क्या हुआ, तो उसने बताया कि मोहन सिंह और कालू ने कुल्हाड़ी से मारा है। उसके बाद रामा ने गोदी में उसे उठाया और घर ले गए। चुनाव की एनिमिटी बताते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन पैरा 4 मेरे पुलिस में बयान हुआ तो बताया था कि रमेश सिंह से मैंने पूछा तो उसने बताया कि अभियुक्त ने मारा है। यह बात मेरे कथन D2 में, मेरे कथन P1 में ना हो तो उसका कोई कारण नहीं बता सकता। लेकिन D2 में है कि ये बात नहीं है। D2 is her his पुलिस स्टेटमेंट। रूप सिंह रामा ने रमेश वहां बैठे, मेरा भाई रमेश घायल पड़ा था, उसके माथे पर, सामने में, सिर में पीछे चोट लगी थी, खून निकलता है। मोहन के घर की औरतें मेरे भाई रमेश के मुंह में पानी पिला रही थी। रामा ने रमेश को गोदी में लेकर कांचे में उठाया और उससे पूछा कौन ने मारा है, तो रमेश ने बोला मोहन वगैरह कालू ने रास्ते में मारा है, और फिर ज्यादा कुछ नहीं बोला। अब बोलिए मानस जी। सर मोहन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन तो डाउटफुल हो गया है। मोहन के खिलाफ तो स्पेसिफिक आया कैसे हो जाएगा? कि पर समझाइए ना, कुल्हाड़ी की जो जब्ती है वो हैंडपंप के पास से है, खुली जगह से है, स्पॉट में आप देखिए ना। और मोहन के मेमोरेंडम के आधार पर मेमोरेंडम के आधार पे, खुली जगह से मेमोरेंडम के आधार पे जब्ती होती है क्या? मेमोरेंडम के स्थान के आधार पे वहां से जब्ती होगी जहां पर से कि वह जगह उसी विशिष्ट व्यक्ति के संज्ञान में है। उसकी वजह से है? जी। क्या करना है? चलिए दिखाएं। जी सर। दिखाएं सर। In this case, since nobody was appearing, therefore this court had ordered to summon appellants by issuance of non-bailable warrants. Next one. Kalu Singh is present before the court, but yesterday he had expressed that he has no contact with his previous counsel and would like to have a counsel from legal aid. Next para. On his request, we had in turn requested Shri Pradeep Kumar Naveria to assist the court and had appointed him as an amicus from legal aid. Next para. Shri Pradeep Kumar Naveria submits that this is a case of no evidence. Conviction has been made on the basis of oral dying declaration. Oral dying declaration of the deceased Ramesh, but there are several contradictions in the evidence of PW3, wife of Ramesh, PW3 Usma Bai, wife of Ramesh, and two other witnesses, namely Roop Singh and Rama PW6 and
Rama, PW7, full stop. It is submitted that PW6 and PW7 are real brothers of deceased Ramesh. Next paragraph. It is pointed out that though all the three witnesses, PW3, PW6 and PW7 claimed that dying declaration was given by oral dying declaration was given by Ramesh in front of them, but PW7 Rama admitted in para 3 of his cross-examination that Ramesh had given oral dying declaration to him only and had not said this thing to anybody else. Full stop. In para 5, this witness admits that when he had reached the place where bullock cart carrying Ramesh had come in front of house of Mohan Singh, Fatya, PW 11, Tikaram, PW4, and family members of Mohan Singh had already collected at the place of the at the said place and were standing surround and were surrounding Ramesh. Full stop. Next para. It is pointed out that theory of rivalry on account of father of Mohan, namely Gendalal, contesting elections against Ramesh at a distance of 2 to 3 years prior to the incident is also contradicted in as much as prosecution witnesses have admitted that there was no rivalry on account of said election contest. Next para. It is pointed out that recovery of an X-wide exhibit P13 is from an open place near hand pump and that will not help the prosecution to establish that appellant alone were the culprit. Full stop. Next para. It is further submitted that evidence of last seen is too general in as much as PW3, so also other prosecution witnesses have admitted that Mohan and Ramesh were related to each other. They were Mama Bhanja in relationship. Kalu is a very good friend of both of them. Full stop. They used to move together and used to consume alcohol together and had gone for a Bhagoria festival together. Full stop. But in absence of completion of chain of circumstances, as is the requirement of law, conviction cannot be maintained and benefit of doubt should be extended in favor of the appellants. Next para. Shri Manasmani Verma. Shri Manasmani Verma submits that as per PW12, there were several injuries, out of which 5 injuries were caused with a sharp and heavy object like an axe. Full stop. Recovery of axe corroborates the injuries found on incised wounds found on the body of the deceased Ramesh, and therefore, on hypertechnical grounds, acquittal should not be recorded. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that there is plethora of evidence to the effect that Ramesh had gone in the company of appellants to attend Bhagoria festival. However, wife of Ramesh, PW3, Usma Bai, admitted that when she had heard cries of Rama and Roop Singh, then she came out of her house. Full stop. She had seen that outside the house of Mohan Singh, Ramesh was brought by Rama
full stop. Ramesh was bleeding and there were injuries on his body, full stop. According to PW3, Ramesh had stated that Mohan Singh and Kalu had hit him with an axe, full stop. However, in cross-examination, she admits that Ramesh was Mama of Mohan Singh and besides having a relationship of Mama Bhanja, they were having very well-established friendship, full stop. Kalu was also their friend, full stop. In para 4, she admits that they were having a sitting on daily basis and used to consume alcohol, full stop. Next para. In para 6, she states that when Ramesh had informed her that दीजिए ना किताब दीजिए that Kalu and Mohan had hit him at that time, Rama and Roop Singh were present. Full stop. Thereafter, she said that when this conversation took place in her angan, that time Dhan Singh had also reached the place of the incidents. However, in para 7, this witness contradicted herself by saying that prior to giving oral dying declaration, Ramesh was unconscious, he gained consciousness for some time and then again became unconscious. Full stop. Thus, it is evident that oral dying declaration given to Uzma PW3 is lacking in credibility, especially when PW7 Rama admitted in para 3 of his cross-examination that when Ramesh had given dying declaration taking names of Mohan Singh and Kalu, then nobody else was present. Full stop. Therefore, evidence of PW3 in regard to dying declaration being given to her is discarded. Next para. PW6 Roop Singh. After having said in the examination in chief that Gendalal had since lost the election, therefore, on account of that election rivalry, Mohan and Kalu had beaten his brother, admits in para 6 that election took place about 3.5 years prior to the incident. Full stop. He further admits in para 8 that Ramesh, except for him, had given oral dying declaration to Nathu and nobody else. Thus, by implication, Roop Singh excludes PW7 Rama and Rama excludes PW6 Roop Singh. Full stop. He further stated that Ramesh was taken out of the bullock cart by the mother and wife of Mohan Singh. Full stop. Ramesh, on way to his house, had given him oral dying declaration. Full stop. He has stated that Ramesh was fully conscious, but this evidence of PW6, PW3, PW6, and PW7 is contradicted by PW12, who has stated in para 5 of his cross-examination that injuries which were found on the body of Ramesh resulted in excessive blood loss, as a result of which the probability of Ramesh being conscious is
not there, and looking to the nature of the injuries, Ramesh would not have been in a condition to speak. Full stop. Next paragraph. When this evidence of PW3, 6, 7 is yeah, जी तो ठीक है नेक्स्ट पैरा क्या लिखा 6 and 7 is examined, then oral dying declaration becomes doubtful. Next para. PW 5 Tikaram. Sorry, 4. For Tikaram, stated that he had gone to the forest to pick woods along with Fatya. When he was returning from the forest at about 8 p.m. and reached near hand pump, he saw that Mohan Singh and Kalu had kept Ramesh on a chakra. Full stop. And thereafter, Mohan Singh had left the bullock cart which had taken Ramesh to the house of Mohan Singh. Full stop. He is not a witness who had seen the incident. However, admittedly, however, in para 9 of cross-examination, he states that Rama and Ramesh, PW 6 and 7, had no conversation with Ramesh. When Ramesh reached house of Mohan, he was unconscious. Full stop. He was breathing but unconscious. Full stop. Thus, prosecution's own witness PW4 discards evidence of PW3, 6 and 7. Full stop. Next paragraph. Fatya PW11 admitted that he and Tikaram PW4 had returned from jungle after at about they had returned were going to the forest to pick wood when near hand pump they had seen Mohan and Kalu. Full stop. Ramesh was sitting in the bullock cart. Mohan was having water at the hand pump. Oxen had become uncontrollable and they had run away. Bullock cart had reached the house of Mohan Singh. They had taken out Ramesh and were offering him water. He had gone to Sarpanch Dhan Singh. Sarpanch said that he is intoxicated and he will not be able to go on a vehicle. Full stop. This witness in para 3 stated that Mohan, Kalu and Ramesh were consuming alcohol near hand pump. Full stop. He admitted that when they had reached the place of the incident, Ramesh had abused them and had asked them to leave his path. Full stop. Contrary to Tikaram, this witness states that when bullock cart reached him, that time Ramesh was alive and in a good condition. Full stop. When they reached the village, that time Ramesh was unconscious and later on died. When bullock cart had reached, then
family members of Ramesh and others had reached the place. Full stop. This witness also states that Rama and Tika had reached after 5 minutes of arrival of Fatya. Next panel. When evidence of PW 412 is taken, PW 11 is taken into consideration, then he is not a witness of oral dying declaration. Full stop. PW 12 has admitted that injuries number 1 to 5 would have been caused with a sharp object, but they can be caused with an X or may not be caused with an X. Full stop. Injury number 7, 8, and 9 can be caused on a person being dragged. Full stop. Had gone for bringing the woods from jungle. Full stop. When he returned, then he saw that bullock cart had already reached house of Mohan Singh. He has not stated anything, seeing the appellants at the hand pump drinking alcohol together with Ramesh or otherwise. Full stop. Contrary to this, PW 11 Fatya has stated that when he had reached hand pump along with Tikaram, then he had witnessed Mohan, Kalu, and Ramesh consuming alcohol. Full stop. Ramesh was sitting at a place which is used by the person guiding the bullock cart. Ramesh had abused him and had asked him to move away, and then Ramesh, Mohan, and Kalu had invited them to have their drink, but they had refused as they had to go to jungle. Full stop. Thereafter, PW 11 stated that when bullock cart had reached the place of Mohan, then all persons had collected there and collected there. Full stop. He has categorically stated that Ramesh was unconscious and was no more. Next panel. In view of this evidence, comma, the law laid down by Supreme Court in Sharad Birdi Chand Sharda in 1984 for SCC 116 is that in case of a circumstantial evidence, the case must be proved and not may be proved. Full stop. There should be a clear motive, comma. There should all the circumstances should be so collated that to prove the guilt of the appellants and nobody else. Full stop. ये जो है पैरा 120 में मैंने निशान लगा दिया 1 से लेकर 5 तक इसको कोट कर दिया पैरा 153 में भी ये दिया हुआ फुल स्टॉप सेम इज द रेशियो ऑफ लॉ laid down by Supreme Court in Gambhir Singh versus State of Uttar Pradesh 2025 SCC online 365 wherein it is held that circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. Full stop. Within inverted commas, it may be noted here that this court indicated that the circumstances concerned within double inverted commas must or should inverted commas close and not inverted commas begin may be inverted commas close established. There is not only a grammatical but a legal distinction between within inverted commas may be proved and within inverted commas must be or should be proved inverted commas close full stop. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Shivaji
Sahab Rao Bobade versus State of Maharashtra 1973 to SCC 793. Full stop. Before drawing any conclusion on the aspect of circumstantial evidence, another important aspect to the facts of the present case is motive. Full stop. PW3, wife of deceased Ramesh, has stated that there was some enmity between father of Mohan and Ramesh, as Gendalal, father of Mohan, had contested election against Ramesh and had lost that election. However, in para 8, she stated that Ramesh and Gendalal were members of the same party. Full stop. Elections took place 3.5 years back. Full stop. Gendalal had forgotten to withdraw his name from the elections and therefore, but he never wanted to contest against Ramesh. Full stop. PW 6, Roop Singh stated in para 6 that election took place about 3.5 years back, and during election, Gendalal, Ramesh and accused Mohan were on talking terms. Full stop. PW 7, Rama stated in para 3 that accused persons and Ramesh are related to each other. Panchayat elections took place 2 years back. After Panchayat elections, Ramesh, Gendalal, Mohan and Kallu never had any altercation. He also admitted that Gendalal and Ramesh had very cordial relationship, as both were brother-in-law to each other in relationship. Full stop. Thus, it is evident that prosecution has failed to establish motive on part of Mohan or Kallu to cause homicidal death of Ramesh on account of election rivalry, which all the prosecution witnesses have admitted that Gendalal had contested election unwillingly, as he could not withdraw his name, and the relationship between Gendalal and Ramesh were cordial. Full stop. No motive has been assigned to Mohan or Kallu. Full stop. Next para. Recovery of X from an open place, as can be seen from Exhibit P13, is also not of much significance. Full stop. Though it is mentioned that there were blood stains on the said X, as is mentioned in Exhibit P24 FSL report, but merely presence of blood stains on an X recovered from an open place will be of no consequence, especially in light of law laid down by Supreme Court in अभी लिखा है अभी जो लेटेस्ट उसमें भी है सर, नो मोटिव वाला। कौन सा इसमें नहीं, अभी जो गंभीर में हाँ, नहीं रेशम सिंह है पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वाला जो दिया। दर्शन में हाँ सर, उसमें मोटिव वाला है, पैरा 11 में है। ये कह रहे नहीं थी, मनस्पति वाली चेक कर लिया कि नहीं? उसका मत लिखा, वो मर जाएगा। इनका कहना काफी है। इसको क्या करेंगे, यहीं से फ्री करेंगे, क्या करेंगे? जेल से फ्री, यहीं से फ्री। Please, if appellant Kallu, who is brought in custody, is not required in any other case, then his freedom be restored to him. पकड़ो मत उसको, पकड़ो मत, अब पकड़ो मत, बरी हो गया है, अब आप अपनी प्रक्रिया कर लेना। जाइए। Shri Navedia shall be entitled to fees from legal aid
High Court Legal Services Committee on producing a certified copy of the order along with the order sheet recorded yesterday. At this stage, Shri Sandeep Costa. Sandeep Costa appears for and submits that he had missed the case yesterday. He had missed the case in cause list yesterday and his name presence will be marked. On his request, presence is marked. चलिए मिलेगा कुछ नहीं नहीं, टंडन नहीं। कॉल